So this chapter of transformation will have a paper share of about 3 to 4 marks in paper 1, and in paper 2 it would have a share of about 7 to 8 marks, and in some cases it could go beyond 7 to 8 marks as well in paper 2, and that could reach up to a level of 10 marks, but that is very rare. Last time 2014 में जून में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे ट्रांसफॉर्मेशन से, उसके बाद से अभी तक 10 मार्क्स तक अचीव नहीं कर सका ट्रांसफॉर्मेशन, so it hovers around 7 to 8 marks. Now coming to the concept points of transformation that we will be discussing over here, तो ट्रांसफॉर्मेशंस में आपने 4 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस कवर करने. द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसलेशन इज द इजीएस्ट वन. और ट्रांसलेशन क्योंकि बहुत ही इजी है और बहुत लाइक इजीली डूएबल और अंडरस्टैंडेबल है, तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं होती. तो यू वुड नॉट सी दैट ऑफन ऑफ ट्रांसलेशन इन एनी ऑफ द पेपर, एंड एट मैक्स अगर ये असेस भी होता है तो पेपर 1 में असेस होता है, सो इट वुड ओनली बी सीन इन पेपर 1. पेपर 2 में आपको ट्रांसलेशन नजर नहीं आएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में आप बेसिकली एक मिरर लाइन या एक मिरर कंसीडर करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को या अपनी किसी भी शेप को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ऑन टू द अदर साइड ऑफ द मिरर लाइन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आता है. देन मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड दैट इज रोटेशन. रोटेशन में आप बेसिकली रोटेट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन स्पेसिफिक एंगल्स ही होते हैं जिनसे आपको रोटेशन कैरी आउट करनी होती है. लाइक आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है, और 90 और 180 डिग्रीज की रोटेशंस ही हमारे सिलेबस में कवर होती हैं. सो द एग्जामिनर वुड से कि आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है शेप को, या 180 डिग्री रोटेट करना है. सो दोज वुड बी द ओनली टाइप्स ऑफ रोटेशंस दैट वील बी गोइंग थ्रू. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास जो फोर्थ और लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती है enlargement, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. उसका रीज़न ये है कि enlargement एक तो सबसे ज़्यादा लेंथी है, इसमें सब टाइप्स 2 हैं, लेकिन ये काफ़ी डिटेल्ड होती है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ऑफनली असेस होते हैं. आपको पेपर 2 में सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी वो enlargement है, और उसके बाद रिफ्लेक्शन रोटेशन जनरली हैव एन इक्वल शेयर इन पेपर 2. तो enlargement के ऊपर हमने काफ़ी फोकस रखना है. enlargement में आप सिर्फ enlarge नहीं करते शेप को, आप सिर्फ शेप को इंक्रीज नहीं करते साइज में, बल्कि आप उसको डिक्रीज भी कर रहे होते हैं इन सम इंस्टेंसेस. तो हमारे पास ये बेसिक डिटेल्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन की. अब हम जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में मेट्रिसेस बनाने पे. तो हमें ये समझना होगा कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का मैट्रिक्स कैसे डेवलप होता है. सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने जब स्कूल में पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें एक शीट दे दी जाती है मैट्रिसेस की, और वो मैट्रिसेस की शीट हमें मेमोराइज करनी होती है बाय हार्ट, एंड दैट वुड बी लाइक द एंटायर थिंग फॉर द मैट्रिसेस. लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट और हाउ टू डेवलप अ मैट्रिक्स फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन. तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिसेस को. नाउ स्टार्टिंग अप विद द मैट्रिसेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए वेक्टर्स का, और उसके बाद आप ज़्यादा कंफर्टेबली और फीजिबली ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिसेस डेवलप कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि जब भी कभी हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए वेक्टर्स को पिकअप करेंगे यहाँ पर,
तो उन वेक्टर की वैल्यूज रहेगी 1 और 0 की फॉर्म में. So they would only be in the form of 1 and 0. Now if you see over here, this is on a positive y-axis. तो यहाँ पर मेरी वैल्यू रहेगी 0 and 1. If you remember, हमने वेक्टर्स में कवर किया था कि ऊपर वाली टर्म x पॉइंट होता है और नीचे वाली टर्म y पॉइंट होता है. So if you are onto the y-axis, अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये y-axis हुआ करता था. ऊपर की तरफ इट यूज टू बी अ पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे की तरफ इट यूज टू बी अ नेगेटिव वाई एक्सिस. नाउ विद दैट बीइंग अंडरस्टूड, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे खड़ा हूं इस वक्त, तो मेरे y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. एंड सिंस आई एम बाउंड टू यूज वन ओनली, तो मैं 0 या 1 में ही होवर करूंगा. सिंस आई एम स्टैंडिंग ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो x ने तो 0 हो जाना है. x would turn out to be 0 and y would be positive 1. अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें बाकी 3 वेक्टर्स भी समझने हैं एंड वील ग्रेजुअली गेट अ ग्रिप ऑन देम. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास एक और केस है राइट ओवर हियर, एंड दिस इज ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस. ये नेगेटिव साइड पर है वाई एक्सिस के, तो आप इसको नाम दे देंगे एज नेगेटिव वाई. और यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये अभी भी वाई एक्सिस पर है तो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट को हम 0 कंसीडर करेंगे, जबकि नेगेटिव वाई पर होने की वजह से इसको हम कहेंगे -1 ऑन वाई. सो एक्स इज 0 and y is -1. Now coming to the right one, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है ये वेक्टर. सो वी विल कंसीडर इट टू बी पॉजिटिव एक्स और यहाँ पे मेरी वैल्यू ने होना है एज 1 ऑन एक्स एंड 0 ऑन वाई. क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर प्लेस्ड है तो हमारे वाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और x का कोऑर्डिनेट +1 इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा है. नाउ आई नीड यू पीपल टू टेल मी कि ये नेगेटिव एक्स पर रखा हुआ एक वेक्टर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप लोग मुझे बता सकें. व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट इन द x? x पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑन x? -1. वेरी गुड. इट वुड बी -1 ऑन x, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स पर रखा हुआ है तो हम इसको -1 कंसीडर करेंगे. और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? एनीवन? व्हाट वुड बी द y कोऑर्डिनेट ओवर हियर? 0. 0. सिंस इट इज प्लेस्ड ऑन x एक्सिस तो हम y को कंसीडर करेंगे एज 0. and this is going to be your vector values for each of these vectors. Now I hope everyone is perfectly clear on this. And with that being understood, हमारे जो वेक्टर का इनिशियल कॉन्सेप्ट है या मैट्रिक्स का इनिशियल कॉन्सेप्ट है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन वो कवर हो चुका है. अब हम जा रहे हैं मैट्रिसेस की फॉर्मेशन पे. So let's begin with the formation of matrices. So first of all, we are going to create or develop matrices for rotations. तो रोटेशंस के लिए मैट्रिसेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रोटेशंस में कितनी टाइप्स हैं जो हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे. सो वी वुड एक्चुअली बी कवरिंग 3 टाइप्स ऑफ रोटेशंस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. एक हमारे पास होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज. Then the second one is going to be 90 degree anti-clockwise. And then finally 180 degrees.
Now 180 degrees would not be either clockwise or anti-clockwise. 180 degrees is just considered as 180. उसका रीजन ये है कि आपका शेप 180 डिग्रीज में अगर क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, उसका शेप सेम प्रोपोर्शन पे या सेम ओरिएंटेशन पे एंड अप करता है. तो अब स्टार्ट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज से. सो वी आर गोइंग टू डेवलप मैट्रिक्स फॉर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन. So first of all, I am going to mark my axis over here. और यहाँ पर अब मैं मार्क करने लगा हूँ अपना y और x वेक्टर. So I've got my x and y vectors over here. Now, first of all, I'm going to mark their original values. इनकी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं सबसे पहले वो लिखनी है मैंने. So can anyone of you tell me what would be the value of this vector? It's present on positive y-axis. So the value of x coordinate for this vector would be how much? Anyone of you? 0. 0. And then what about the y coordinate of it? It would be positive 1 on y. Now moving to the other side, तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा वेक्टर मौजूद है which is present on positive x. So we are going to consider it to be present on positive x. And since it is present on positive x, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है what would be the value of x coordinate over here? Yes. Ashita, Nabiha, Ramsha, anyone of you? 1. 1. So it would be positive 1 on x. And what would be the value of y? 0. 0. Perfect. So we have got the initial values for each one of them. Now what we are going to do is we are going to rotate them. अब क्योंकि हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन पे हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन कुछ इस डायरेक्शन में होता है. एंड सिंस वी आर डूइंग इट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वी आर डूइंग इट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये एक कोऑर्डिनेट जो आपको नजर आ रहा है ये 90 डिग्री का होता है. लाइक इफ यू आर वाचिंग इट ओवर हियर, तो ये एक 90 डिग्री एंगल डेवलप हो गया है. एंड every time when I try to rotate 90 degree, I'm going to change my coordinate position. अब ये क्या कह रहा हूं मैं और ये कैसे होगा ये जरा समझ लेते हैं. If I'm trying to rotate something by 90 degree clockwise, तो मेरा जो वेक्टर यहाँ पर मौजूद है वो 90 डिग्री रोटेट करके इस जगह पे पहुंच जाएगा. And anything which is present over here is going to come down by 90 degrees towards here. So this is how you are going to rotate your vectors. अब यहाँ से हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ कैरी करेंगे. This vector over here is going to rotate 90 degree and come down over here. तो यहाँ से हमारा वेक्टर चलकर यहाँ पहुंच चुका है. And the one present over here is going to rotate itself 90 degrees as well, and it is going to come down over here. So I would see the vector over here and over here. So the one which was present at this side was termed as y. तो अब वो यहाँ पर पहुंच चुका है, तो हम इसको नाम दे देंगे y dash. And the one which was present over here has now come down over here. तो जो x पर हमारा वेक्टर रखा हुआ था, this was x vector,
वो अब क्योंकि नीचे की तरफ आ चुका है बाय रोटेशन ऑफ 90 डिग्रीज, तो इसको हम नाम दे देंगे x डैश. सो आई हैव गॉट माय y डैश एंड माय x dash present over here. Now I'm going to create a value for each one of them again. अब values कैसे बनेंगी वो आप लोगों को आता है, जरा ट्राई कर लेते हैं. So y dash is present on x axis. y dash कहाँ पर रखा हुआ है? x axis पे रखा हुआ है. तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनेगी that would be +1 on x and 0 on y. Now coming to the x dash, तो ये रखा हुआ है नेगेटिव y एक्सिस पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? इट इज प्रेजेंट ऑन नेगेटिव x एक्सिस, सॉरी नेगेटिव y एक्सिस. तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा ये आप लोगों ने मुझे बताना है फॉर x एंड फॉर y. यस, एनीवन ऑफ यू? इट इज currently present on the negative y axis. So anyone of you who could tell me what would be the value of x over here and what would be the value of y? The value of x coordinate over here, since it is present on y axis, so x would be 0, and since it is present on negative y axis, तो हम कह देंगे -1. Very good, Ramsha, perfect. So we have got the coordinates for each one of them. तो अब मेरे पास x dash और y dash दोनों ही आ चुके हैं. Now I am going to create the matrix in the very final step. तो मैट्रिक्स डेवलप करने का सीन ये है कि आपने पहले x डैश लिखना होता है और फिर y डैश लिखना होता है. सो x डैश वुड कम फर्स्ट एंड देन द वैल्यू ऑफ y डैश वुड कम अप. सो इट वुड बी 0 -1 एंड 1 0 लाइक दिस. तो ये कुछ हमारे पास मैट्रिक्स डेवलप होकर आ गया है फॉर 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है इसमें तो पूछ लें, otherwise we'll move forward onto the next type. Yes, anyone of you having any sort of query in this? Okay, so now we are moving towards the next type, और वो होता है 90 degrees anti-clockwise. So we are again having the vectors present in their initial state like this, and then we are going to rotate them as per the transformation type. तो हमें यहाँ पर कहा गया है that we need to do 90 degrees of anti-clockwise rotations. तो 90 degrees का मतलब होता है एक quadrant. Like if something was present over here, it would go anti-clockwise and would go upwards, and anything which was present over here would also go anti-clockwise and would come down by 90 degrees towards this side. Now trying that out, तो हमारा यहाँ का vector which was present over here would come down towards this side, and the vector which was present over here would come towards the left side by 90 degree anti-clockwise, और वो कुछ इस जगह पे हमें नजर आएगा. So we will end up having two vectors over here and over here. Now we need to name them. तो अगर आपको याद हो यहाँ से vector उठकर इस जगह पे आया है, so this one is x dash, and the one which is present over here has actually been traveled from this side towards here. तो वो y axis से आ रहा है, so it's going to be named as y dash. Now you people need to tell me the values of x dash and y dash
तो आप में से कोई बता सकता है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x डैश फर्स्ट? या व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x डैश? It would be 0 because it is present on positive y-axis. So x का coordinate हो गया है 0 and the value of y is going to be positive 1. Since it is present on positive y-axis, तो हमारा x coordinate तो 0 है, जबकि y coordinate को हम 1 consider करेंगे, लेकिन positive 1 because we are dealing with something present on positive y-axis. Now I hope this is perfectly clear. अब आप लोगों ने मुझे आगे इसकी वैल्यू भी बतानी है which is for y dash. Yeah, can anyone of you tell me the value of y dash? Zero. It's present on x axis. ये negative x axis पर रखा हुआ है. Oh. -1 and 0. Very good. So we'll have the value as -1 and 0. Now, anyone of you who could complete the matrix for me? We first place the x dash and then the y dash. What would be the value of the matrix? It would be 0, 1, -1, 0. So if you see over here, y dash is coming down here and x dash is coming down over here. तो हमारे पास x dash की वैल्यू पहले आती है मैट्रिक्स में और फिर हम y dash की वैल्यू को पुट इन करते हैं. Now coming to the last type of rotation, and that is 180 degrees. So for 180 degree rotation आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर नहीं करना है. उसका रीजन ये है कि आपके पास 90 डिग्रीज के अंदर डायरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन 180 डिग्रीज में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं होती, बिकॉज either we are like if going from right side or from left side, you would end up at the very same position. So initially we are having the vectors over here. Now since it is 180 degrees, तो हमारा ये वेक्टर 90 डिग्री यहाँ पर कवर करेगा and then would cover a further 90 degrees and come down over here. So this was x, now it has come down over here and would be x dash. Then for this one right over here, it's going to rotate 180 degrees as well. Its first 90 degrees is covered over here, then it's going to cover a further 90 degrees and would come down over here. तो हमारा y dash इस पोजीशन पर आ जाएगा. Now what we need to do is we need to name this one as y dash and create the values for them. तो अब इनके लिए values हमें develop करनी होंगी. Can anyone of you tell me the value of x dash? Yes, what would be the value of x dash? -1, 0. And what would be the value of y dash? -0, -1. Okay, perfect. तो अब मैंने matrix को complete करना है. I'm going to put in x dash first and y dash afterwards. So anyone of you who could tell me the matrix value? -1 and 0. Okay, and then
0 minus 1. So this would be your complete matrix for 180 degree rotation. और यहाँ पर हमारी जो रोटेशन के मेट्रिसेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ यू पीपल नेवर हैव टू थिंक ऑफ द मैट्रिक्स इन योर हेड. आपने उसको डेवलप करना है, बिकॉज देयर आर लाइक 8 डिफरेंट मेट्रिसेस और याद रखना बहुत मुश्किल होता है इनको. तो ज़्यादा बेहतर है कि आप मैट्रिक्स को डेवलप करना सीख लें. वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस लॉजिक, तो आप मैट्रिक्स को कहीं पे भी डेवलप कर सकते हैं. एग्जामिनर आपसे राइट अवे पूछेगा कि मुझे मैट्रिक्स बताएं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन का, तो वो आपने बताना होता है. नाउ इन केस अगर मैट्रिसेस आपको दे दिए जाएं तो आप उससे ट्रांसफॉर्मेशन भी बता सकते हैं. लाइक द एग्जामिनर वुड गिव यू अ मैट्रिक्स, लेट्स से 0 minus 1 1 0 मैट्रिक्स दे दिया है आपको, एंड द एग्जामिनर वुड आस्क यू अबाउट द रोटेशन, वेदर इट इज लाइक वॉट एवर ट्रांसफॉर्मेशन इट इज. वो आपने फिर एक्सप्लेन करना है वेदर इट इज रोटेशन और रिफ्लेक्शन, और वेदर इट इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 एंटी क्लॉकवाइज, वो सब आपने जज करना होता है. So what you are going to do is you are going to develop a matrix and then check it out कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है. Now मूविंग फॉरवर्ड, तो इस मैट्रिक्स का कुछ फ़ायदा भी है या नहीं ये भी देख लेते हैं. अगर मुझे एग्जामिनर भाई एक ट्राइंगल देते हैं और कहते हैं कि हमने इस ट्राइंगल को रोटेट करना है बाय -1 0 0 -1, and he has given you all the coordinates for each of these points. लाइक जो ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स थे उनके कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए हैं आपको. सो इट्स 5 6 2 6 एंड 2 12 राइट ओवर हियर. आपको तीनों पॉइंट्स तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, एंड यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द मैट्रिक्स एज वेल कि इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली हमने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैरी ऑन करनी है इस पर. सो सिंस वी आर कैरिंग आउट ट्रांसफॉर्मेशन एज पर दिस मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को एक मैट्रिक्स में बंद करके, लाइक सबसे पहले 2 12 को मैंने पिक कर लिया है, देन आई पिक्ड अप 2 6 एंड देन 5 6. इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ से पिक करके आई पुट देम इनटू अ सिंगल मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में पुट इन करने के बाद मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स था उससे करवाना है इनको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के. इट इज अ 2 by 3 मैट्रिक्स एंड दिस वन इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स. तो यहाँ पर सेंटर वाले जो हमारे वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज जो मौजूद हैं मैट्रिसेस में उनको इंटरचेंज कर लेंगे. सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस 2 by 2 फर्स्ट एंड 2 by 2 2 by 3 आफ्टरवर्ड्स. तो अब देखें क्या होता है. दिस वन इज हैविंग एन ऑर्डर ऑफ 2 by 2 एंड दिस वन इज हैविंग एन ऑर्डर ऑफ 2 by 3. तो आपने जैसे ही पोजीशंस इंटरचेंज की हैं, आपकी जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है वो अब पॉसिबल हो गई है. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू चेक आउट द कॉलम काउंट ऑफ द राइट वन. ये हम मैट्रिसेस में काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू. तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं. सो वी आर गोइंग टू कॉपी दिस वन थ्राइस. -1 0 0 1, this was our first time. Then -1 0 0 1, this was our second time copying it, and finally this one is our third time copying the matrix. Now what we need to do is we need to pick up the first term from here and multiply it over here. बीच में लगाएंगे plus, then the second term which is 12, then the third term बीच में plus, then the fourth term is 6, then the fifth term is 5. Then again we need to make sure we are adding up a plus sign over here, and then finally 6 being placed over here. Now we are just going to multiply them. It would be -2 plus 0 0 plus 12, then -2 plus 0 0 plus 6.
Then we have -5, 0, 0 and 6. So we'll have it as -2, So 12, -2, 6, -5 and 6. Yeah, वो ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स -1 नहीं होगा? yeah, right over here. हाँ, 0 + 1 -1 नहीं होगा ये? Yeah, it would be -1. My bad. So these are the values that you are going to get at the very end. तो अब हमें ये पता चल गया है कि मेट्रिसेस को यूज कैसे करते हैं. अब आप अगर नोटिस करोगे तो आपका जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट सेट था वो यहाँ पर प्रेजेंट है ऑलरेडी. So what we are going to do is we are going to bring it down and compare it with our new values. So the newer values are -2, -12, -2, -6, -5 and -6. So it would actually be present right over here. अब आपने अगर plotting करनी है तो आप plotting भी कर सकते हैं because you already have the coordinates for this vector. मैंने भी estimation के थ्रू ही अभी आपके सामने ये जो बनाया है triangle ये plot करके दिया है आपको. So since you would be having the graph with you तो आप plot भी कर सकते हैं actual figure को and that's not any sort of a rocket science. बहुत easily आप इसको फिर plot भी कर पाएंगे. So this is how you use like the matrices of transformations and find the values directly. तो transformations के अंदर अगर matrices given हो और आपको transformation पूछी जाए तो आप ज़्यादा बेहतर है कि transformation का matrix use कर लें like this rather than solving it completely by transformation concept. तो transformation concept use करने से बेहतर है कि matrices को use कर लिया जाए. Now with that being understood हम जा रहे हैं अब rotation के matrices की तरफ, in fact reflection के matrices की तरफ. And for reflection we are actually having 4 different types. But reflection is far more easier than rotation. और रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहली टाइप होती है x is equals to 0. This is actually the y-axis. Then the next one is y is equals to 0 and this one is x-axis. Then we have x equals to y and then we have x equals to negative y, or it could be y equals to negative x. These are the same things. Now over here what we need to understand first of all is कि ये जो मैंने equations लिखी हैं इन सारी equations का मतलब क्या है. So if you have a line like this is actually your y-axis and if you have a line right over here, so this is your x-axis. अब जो आपका y-axis होता है इसको आप x equals to 0 भी कहते हैं क्योंकि इस पूरे एक्सिस के ऊपर आपके x की कोऑर्डिनेट्स या x के जो वैल्यूज होते हैं वो 0 होते हैं. And this one over here is considered or termed as y equals to 0. In against of it, if I'm having a line right over here, so this is y equals to x, and if I'm having a line like this, so this one is y equals to negative x. अब इन सारी लाइंस को हम यूज कैसे करेंगे वो जरा समझ लेते हैं.
Now coming to the very first type of reflection, which was x equals to 0. तो अब ये x equals to 0 या y axis आपको बता क्या रहा है? It is telling you that your line of reflection is present over here. तो आपकी line of reflection यहाँ पर placed है. Now we are going to develop the vectors again. अगर आपको याद हो, एक वेक्टर हम रखा करते थे x पे और एक y पे. Now since my line is right over here, तो हम इस वेक्टर को मूव नहीं कर सकते. द रीजन इज कि अगर आप में से कोई फिजिक्स पढ़ता हो तो उनको मालूम होगा, इफ वी आर ऑन अ मिरर लाइन, अगर हम मिरर के ऊपर ही बैठे हुए हैं तो हमारी रिफ्लेक्शन डेवलप नहीं होती. दैट इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स. तो अगर हम मिरर लाइन इसको कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा ये वेक्टर मिरर लाइन के ऊपर ही प्लेस्ड है, सो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी रिफ्लेक्शन एट ऑल. तो इसकी रिफ्लेक्शन अपने ऊपर ही डेवलप हो जाएगी and we are going to name itself as y dash. इसका ओरिजिनली नाम y था, हमने इसको y dash नाम दे दिया क्योंकि इसकी इमेज भी यहीं पर डेवलप हो गई है. बट इफ यू सी दिस वन, सो इट इज योर x. और क्योंकि मिरर लाइन अभी यहाँ पर प्लेस है, so what's going to happen is that your x would flip onto the back side. आपको back side पे नजर आएगी x की image, and that would be your x dash. So this is going to be your final placement for x and y, और इनको हम नाम दे देते हैं x dash and y dash. Now to figure out the values, it's very easy for you people now. तो आप लोगों ने मुझे पहले x dash और फिर y dash की वैल्यू बतानी है. So can any one of you tell me what's the value for x dash? Yeah, what would be the value for x dash? It's present over here minus 0. negative x axis. Very good. So minus 1 0 हो गया हमारा x dash. Now what would be the value for y dash? Zero 1. 0 1. Perfect. Now what would be the matrix? Minus 1 0 and 0 1. Okay, perfect. So we first write x dash and then we write the y dash. We have the matrix for the transformation of x is equals to 0. तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हो चुकी है कंप्लीट. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज y is equals to 0. So for y equals to 0, you're having your x and y axis placed over here. Your y vector and x vector would be placed at the same positions. Now since it is y equals to 0, तो ये x axis पर हमने line of reflection develop करनी है. And what do you think what will happen over here? Will this one move or not? It is present on the line of reflection, तो इसमें move नहीं होना है. So this one is going to be my x dash as well as x. ये move नहीं हो रहा है. But if you see this one, it's going to be reflected downwards. तो ये नीचे की तरफ reflect हो जाएगा and would come down over here. And this is going to be the y dash. Now you need to figure out the value of
x डैश एंड y डैश, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि x डैश और y डैश की वैल्यू क्या होगी. So it would be positive 1 and 0 for x dash and 0 minus 1 for y dash. You just need to complete your matrix. It would be 1 0 0 minus 1, and that's your matrix for y equals to 0. यहाँ पर हमारा जो मेट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है. आज के लिए इतना ही रखेंगे, और फिर इसके बाद जो बाकी की डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. So I hope everything is perfectly clear in today's class. और ये although ज़्यादा important नहीं है, but it is very technical and tricky. तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि matrices develop कैसे होते हैं. So we are going to wrap it up over here, and that's like the entire thing taught today. And I hope everything taught in today's class is perfectly clear. तो इसके जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. और उसी क्लास में आपको जो है कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी लाइक प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. So hopefully in the next class we'll be done with our transformations, or at max we'll need half an hour more into the class after that one. So that's the wrap for today. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में. Take care everyone. Allah Hafiz.